Good morning students, how are you? Welcome to Maths class 6 chapter 10 mensuration part 3 exercise 10.1 question number 7 to 11. Students, in last video we discussed exercise 10.1 from question number 1 to 6 and today we will discuss from question number 7 to 11. So let us start. Find the perimeter of a rectangular lawn whose length is 20 meter 50 centimeter and breadth is 12 meter 20 centimeter. So as usual students, we draw a rough sketch of rectangular lawn and denote length 20 meter 50 centimeter and breadth is 12 meter 20 centimeter. And write length equal to 20 meter 50 centimeter and converting it into meter we will get 20.50 meter, because 20 meter means 20 meter, 50 centimeter means 0.5 meter, half meter means ki 20.50 meter, and breadth equal to 12 meter 20 centimeter equal to 12.20 meter. If you convert 20 centimeter into meter, you will get 20 by 100 means 0.20 meter, means ki breadth is 12.20 meter. Now perimeter of the rectangular lawn equal to 2 into L plus B. अब जानते हैं स्टूडेंट्स, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगुलर लॉन है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 into L plus B. Equal to, you have to put the value 2 into length equal to 20.50 plus breadth equal to 12.20 equal to 2 into, adding these two length and breadth we get 32.70 equal to 2 into 32.70 equal to 65.40 meter equal to 65 meter and 40 centimeter, which is the required perimeter of the rectangular lawn. Now move to next question. A rectangular piece of plot measures 0.6 km by 0.5 km. It means कि the length of rectangular plot is 0.6 km and breadth is 0.5 km. Each side is to be fenced with 5 rows of wires. How many rows of wires students? 5 rows of wire. Means rectangular lawn का प्लॉट का हर साइड को 5 rows of वायर से फेंस करना है, मतलब 5 राउंड 5 चक्कर वायर लगाना है. What is the length of the wire needed? तो कितना वायर जरूरी होगा. And if the wire cost ₹9 per meter, what will be the cost of the wire required for fencing? और यदि 1 मीटर वायर का कॉस्ट ₹9 है तो फेंसिंग का कितना कॉस्ट आएगा. तो यहाँ पर केवल यही समझना है स्टूडेंट्स कि 5 रोज ऑफ वायर से फेंस करने के लिए कितना वायर लगेगा, पेरीमीटर का 5 टाइम्स, क्योंकि 1 रोज ऑफ वायर अगर यूज करते तो पेरीमीटर के इक्वल वायर लगता. तो 5 रोज में क्या लगेगा, 5 इंटू पेरीमीटर. पेरीमीटर फाइंड करके 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ वायर निकल जाएगा, और टोटल लेंथ ऑफ वायर में ₹9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ वायर निकल जाएगा, मीन्स कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकल जाएगा. तो फर्स्ट, दिस इज द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ 0.6 किलोमीटर length and 0.5 kilometer breadth. So write length equal to, length of plot equal to 0.6 kilometer, breadth of plot equal to 0.5 kilometer, and perimeter of rectangular plot equal to 2 into L plus B equal to 2 into 0.6 plus 0.5 equal to 2 into 1.1. 0.6 plus 0.5 equal to 1.1 equal to 2 into 1.1 equal to 2.2 kilometer. It means perimeter of this plot is 2.2 kilometer. Means if one round of wire is to be
used, then 2.2 kilometer wire will be needed. But since each side is to be fenced with 5 rows, therefore length of wire needed equal to perimeter into 5 equal to 2.2 kilometer into 5 equal to 11.0 kilometer, that is 11 kilometer. 11 kilometer wire is needed. If you convert 11 kilometer into meter, you will get 11,000 meter, because 1 kilometer equal to 1000 meter, then 11 kilometer equal to 11 into 1000 meter equal to 11,000 meter. And the cost of 1 meter of wire equal to rupees 9. Therefore, the cost of 11,000 meter of wire, we have to find the cost of fencing, and length of wire used is 11,000 meter. So cost of 11,000 meter of wire equal to rupees 9 into 11,000 equal to rupees 99,000. Thus, the cost of fencing the plot will be rupees 99,000. Now next question. Ranjan walks around a rectangular park of length 60 meter and breadth 40 meter. Ranjan walks around a rectangular park of length 60 meter and breadth 40 meter. We will read the question and draw the figure according to question, so that we need not to read the question again and again. We will see the figure. We draw a rectangle instead of rectangular park of length 60 meter and breadth 40 meter. Now Ranjan walks around this rectangular park, and Smita walks around a square park of side 55 meter. Smita walks around a square park. Let us draw a square park of side 55 meter. Both take 3 rounds each, and both Ranjan and Smita takes 3 rounds of the park. Ranjan takes 3 rounds of the rectangular park, and Smita takes 3 rounds of the square park. Who walks more distance and by how much? Question is, student, who walks more distance and by how much? So we have to find the perimeter of rectangular park and perimeter of square park, and multiply both the perimeter by 3 and then subtract to find who walks more by how much. So first we find the perimeter of rectangular park for distance covered by Ranjan. So perimeter of rectangular park equal to 2 into length plus breadth equal to 2 into 60 plus 40 equal to 2 into 100 equal to 200 meter. Means ki perimeter of rectangular park is 200 meter. Therefore distance covered by Ranjan in 3 rounds, because Ranjan takes 3 rounds and Smita also takes 3 rounds of the square park. So distance covered by Ranjan in 3 rounds equal to 3 into 200 meter equal to 600 meter, and perimeter of a square park equal to 4 into side, because Smita runs a square park, runs around a square park. So perimeter of a square park equal to 4 into side equal to 4 into 55 meter. Side of a square park is 55 meter. Then 4 into 55 equal to 220 meter. Thus perimeter of a square park is 220 meter. Therefore distance covered by Smita in 3 rounds of a square park equal to 3 into 220 meter equal to 660 meter. Hence Smita walks more than Ranjan, because Smita walks 660 meter and Ranjan walks
600 मीटर. It means Smita walks more. तो स्मिता walks more than Ranjan by how much? 660 मीटर minus 600 मीटर. This is the difference, equal to 60 मीटर. Means कि स्मिता walks 60 मीटर more than Ranjan. Move to next question, students. The rectangular piece of land is to be fenced for an exhibition. The length of the exhibition land is 250 meter and its breadth is 200 meter. क्या है स्टूडेंट्स? एग्जीबिशन के लिए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड को फेंस करना है, मीन्स बाउंड्री करना है. इसका लेंथ है 250 मीटर, ब्रेड्थ है 200 मीटर. वी नीड टू कीप एन एंट्रेंस ऑफ 10 मीटर. लेकिन एग्जीबिशन के लिए फेंसिंग करते समय 10 मीटर का एंट्रेंस भी रखना है, मतलब प्रवेश द्वार रखना है. एंड एन इमरजेंसी एग्जिट ऑफ 5 मीटर. और उसमें एक इमरजेंसी में निकलने के लिए इमरजेंसी एग्जिट भी रखना है 5 मीटर का. तो इफ़ द कॉस्ट ऑफ दिस स्पेशल फेंसिंग इज ₹175 पर मीटर. अब इस स्पेशल फेंसिंग का कॉस्ट क्या आता है स्टूडेंट्स? 175 पर मीटर. देन व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग? यू हैव टू फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. तो यहाँ पर ध्यान देना है स्टूडेंट्स. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ फेंसिंग. तो लेंथ ऑफ फेंसिंग विल बी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड. बट वन थिंग is to be keep in mind that there is an entrance of 10 meter and exit 5 meter. So this 10 meter plus 5 meter should be subtracted from the perimeter, because fencing will be done leaving 10 meter and 5 meter, these two entrances. So first we find the perimeter of the rectangular land, which is 250 meter long and 200 meter broad. यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये लेंथ और ब्रेड्थ है. अगर 10 मीटर का एंट्रेंस छोड़े हैं तो ये फेंस नहीं होगा, मतलब ये कॉस्ट में नहीं ऐड होगा. 10 मीटर का कॉस्ट कम होगा. और 5 मीटर का सपोज इमरजेंसी एग्जिट है, ये 5 मीटर का कॉस्ट नहीं लगेगा. तो जो पेरीमीटर आएगा उसमें 15 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर, 15 मीटर माइनस करेंगे और उसके बाद कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे. ₹175 पर मीटर कॉस्ट है, तब हम कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकाल पाएंगे. सो लेंथ ऑफ लैंड इक्वल टू 250 मीटर, ब्रेड्थ इक्वल टू 200 मीटर, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 2 इंटू 250 प्लस 200 इक्वल टू 2 इंटू 450 इक्वल टू 900 मीटर. तो 900 मीटर इज द पेरीमीटर ऑफ द लैंड. एंड लेंथ ऑफ entrance equal to 10 meter and length of emergency exit equal to 5 meter. Therefore length of special fencing equal to 900 meter minus 10 plus 5 meter, because perimeter is 900 meter students and 15 meter is the entrance and exit. तो एक्चुअल लेंथ ऑफ स्पेशल फेंसिंग इक्वल टू 900 माइनस 15 मीटर इक्वल टू 885 मीटर. दिस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ फेंसिंग, स्पेशल फेंसिंग, एंड वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ दिस लेंथ. एंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट ₹175 पर मीटर इक्वल टू ₹175 इंटू 885 equal to ₹1,54,875. You will multiply 175 and 885 to get ₹1,54,875. This is the cost of special fencing of the rectangular land for exhibition. Now move towards
Last question students, question number 11. A rectangular field is 15 meter long and 10 meter wide. Another rectangular field having the same perimeter has its side in the ratio 4:1. Find the dimension of the rectangular field. यहाँ पर स्टूडेंट्स एक रेक्टेंगुलर फील्ड है 15 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड. दिस इज वन रेक्टेंगुलर फील्ड. अनदर रेक्टेंगुलर फील्ड हैव द सेम पेरीमीटर. मीन्स कि पेरीमीटर ऑफ दिस फील्ड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ दिस फील्ड, but length and breadth is not given. The ratio of length and breadth is given 4:1. So let us assume the length of this rectangle is 4x and breadth is x. Then the ratio of length and breadth will be 4:1. 4x by x करेंगे, x x कटेगा, 4:1 आएगा. तो ये दो रेक्टेंगल है आपके पास. हमको फाइंड करना इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ. तो पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 2 इंटू 15 प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू 25 इक्वल टू 50 मीटर. तो पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल, फर्स्ट रेक्टेंगल इज 50 मीटर एंड इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट both has same perimeter. It means कि perimeter of this second rectangle is also 50 meter. The length, let the length and breadth of second rectangular field be 4x and x respectively. अब इस पेरीमीटर से 50 मीटर जो पेरीमीटर है सेकेंड रेक्टेंगल का भी, उससे हमको यूज निकालना है लेंथ और ब्रेड्थ. तो लेंथ को अज्यूम कर लिए 4x और ब्रेड्थ को अज्यूम कर लिए x. नाउ पेरीमीटर ऑफ द सेकेंड रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इज 4x एंड ब्रेड्थ इज x इक्वल टू 2 इंटू 5x. 4x प्लस x क्या होता है स्टूडेंट्स? 5x होता है. एंड 2 इंटू 5x इक्वल टू 10x. इट मीन्स कि पेरीमीटर ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल इज 10x. And you know the perimeter of second rectangle is equal to perimeter of first rectangle, that is 50 meter. So you can say that 10x equal to 15 meter. Since the perimeter of both fields are equal, therefore 10x equal to 50. This implies that x equal to 50 by 10. अगर 10x equal to 50 दिया हुआ स्टूडेंट्स, तो x equal to कितना हुआ? 50 by 10 equal to 5 मीटर. इस प्रकार से x निकल गया आपको 5 मीटर. नाउ यू कैन फाइंड लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इक्वल टू 4x इक्वल टू 4 इंटू 5 बिकॉज वैल्यू ऑफ x इज 5. तो 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेड्थ इक्वल टू x इक्वल टू 5 मीटर. x तो 5 मीटर ही है. thus you could find the length and breadth of the second rectangle if ratio is given and perimeter is given. So this much for today students. Exercise 10.1 finishes. In next video we will introduce area of closed figure. We will discuss about area, its definition and formula to find area of closed figure, area of a square, area of rectangle, etc. So this much for today students. And if you are learning from this totally free video series, I request you all to please like, share and subscribe my YouTube channel and spread these videos to most of the students of India so that you may help your friends and many more students even without spending a penny. Thank you.